Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, mainly we discussed about cascading rules which are associated with foreign key. Okay, so on delete cascade, on update cascade, or on delete restrict, or on delete set null. All those things we discussed. Then I showed you one example. Practically, I showed you how it is working. Now, today, some more DML commands we have to learn, like update, delete. Okay. So initially, we are just going to cover with the syntaxes, then how to apply these commands in scenario-based questions that we'll learn later. So today we are going to take one more DML command. There is data manipulation language command called update. Okay, so update is used to modify values in the table. So in your table, there are columns. Column contains values. And if you want to change any value from that table, we use update command. Okay. Now, MySQL generally considers update, delete as very serious commands. And therefore, many times it may not allow you to directly apply this command. Okay, why? Because there is restriction. As it says, update command, delete command is a safe mode command. Okay, it is for the security purpose, it will not directly allow. So there is one flag which is by default enabled, which is called as a safe mode update. Safe mode update flag is always enabled so that when you try to do update or delete in that safe mode, it will not allow. So you have to disable that flag, which in yesterday's session also I showed you, but now systematic syntax and all I have to do. So once you disable that flag, which is a safe mode update, if you disable, now it will allow you to do update, delete, and all those activity. Okay. So first we'll see how to do update. There is very simple command update. The table name, you'll give the table name. Then set, then column, and to that column, whatever value you want to give, means column name equal to whatever value. It can be an expression, it can be a constant value, it can be an expression built from some another columns. Okay, so you have to just give expression. Same way if you want to modify at a time different column value. Okay, so you can give that another column also. Column 2, again expression. Okay, this can go on. And now if you don't give where condition, then it is going to modify all the values of that column. And if you are putting where condition, where and then the condition, this part is optional, remember. Okay, this part is optional, where condition. So if you, anything what I write in square bracket, anything what I write in square bracket is optional, remember guys. So if you are writing where condition, then it will update only those records which are satisfying this condition. Means आपके टेबल में जितने भी records है वो record जो ये condition satisfy करता है, only that records column value will be modified. Otherwise, now as I said, in this table there are multiple columns and many rows are there. If you don't give the condition, it is going to modify that column all value. वो column में जितने भी value है सब modify हो गए. And अगर condition दिया है तो only the records which are satisfying that condition, only that record, the particular column value will be modified. Okay, so that is the syntax. It's quite simple syntax. So it is going to modify only those records which are satisfying that
condition. And if you don't give that where clause and the condition, it is going to modify all the row. Okay, ठीक है? So what does update do? I hope you got it. Update is used for modifying values in the table. So update command, it comes under DML category, data manipulation. Data manipulation language. So update command in SQL is used to modify existing records in a table. So in the table, there are many records and you want to modify the values of those existing records. Normally, usually it happens that in MySQL, when you directly try to issue this update command, it may happen that you may get safe mode error because according to MySQL, update is a serious command and therefore directly it cannot be issued. So there is one flag, okay, SQL safe update. It is by default enabled. And as it is enabled, it doesn't allow you to directly do this update. So you have to disable that. And in your machine, if it doesn't get, so possible it is already disabled. So if you get a safe mode error while executing queries, which query? This update query. Then give this below command. SQL safe updates, which is by default one, you're making it zero. अभी आपने जीरो किया है मीन्स उस फ्लैग को डिसेबल किया मीन्स सेफ मोड डिसेबल हो गया as safe mode is disabled now you are in a unsafe mode therefore you can issue update command and then comes the update command syntax update is the keyword. This is the keyword, then the name of the table, then set is again a keyword, column name equal to expression, column name equal to expression, and where condition. I told you if you don't mention where clause, it is going to update all the records of that column. Means all the values of that column will be changed to this new value. वो column में जितने भी values हैं, all will modify. And if you give where condition, it will only update those records which are satisfying this condition. Okay. As an example, suppose. Now, yesterday we created one employee table, if you remember. कल हमने किया था. Yesterday, just before winding the session, I think this one only, yeah, this second one. See, we created one database, net-to-net DB, then we created it, then we have entered in it by using it, okay? And then we added some around 9800 records. Okay, now it is saying update the salary of all employees in HR department to 50,000. So instead of 50, we will just increase it by 500 or something like that. ठीक है? तो जितने भी HR के हैं, see. Now these are all employees, but in that there are some HR employees also. You can see second one, getting Priya Deshmukh, HR, 48,000. Okay, one more HR, 42,000. One more HR, 47,000. Okay, this HR, 56,000. So what I'll do is, instead of making their salary directly 50,000, I'll just increment by 5. So update command, update employee. Update is a keyword, but you can write in uppercase, lowercase, doesn't matter. Set. Now, what we have to set? Salary equal to salary plus 5. Now here I'm just updating salary column. At a time, if you want to update multiple column, comma, second column, comma, third column. So I am just updating salary. And what I'm making? Salary equal to salary plus 5. Now, if I issue this command, fine 500. If I issue this command, it is going to increase the salary of everyone by 500. Just check if you want, run this. Now, is it giving an error to me that you're trying to do this command in a safe mode? And in my case, that safe mode flag is true. Okay, so what I have to do, set
SQL underscore save underscore updates equal to 0. Now I have disabled that. Safe mode is disabled, which is enabled. Now I'm disabling. So now it will allow you to issue update command. See, has it affected 98 records? You can see. Can you see everyone's salary is increased by 500? हर एक का salary 500 से बढ़ गया, right? ये HR, first HR, it was 48,000. It has become 48,500. But not only HR, everyone, because I didn't give any condition. But in this only, if I give condition, okay, and what will be the condition? Where department equal to HR. Now, how to build conditions, what are arithmetic operators, relational operators, we will be learning that, don't worry. Okay, sorry. So the condition given is department equal to HR. Now it is not going to increase the salary of everyone. Only the employees of department HR, their salary will be incremented by 500. See here. How many records are affected? Only 24. Previously 98 record affect किए क्योंकि सारे 98 में 5 ऐड किया, बट अभी सिर्फ 24 एम्प्लॉइज है जो एचआर के हैं, उनका ही सैलरी अपडेट किया है. You can check. Can you see? Previously it was 48,500. Has it become 49? ठीक है, ये एचआर देखो, ये 43,000 हो गया. Get it? ये 49,000 हुआ है, ये 48,000. Meaning only those employees who are belonging to department HR, their salary is incremented by 500. Okay, now this second one is now या ये क्वेश्चन जो दिया है, इसका कहना है कि जितने भी एम्प्लॉइज एचआर में उनका स्ट्रेट अवे सैलरी 50,000 करो. तो आप लोग कैसे लिखते थे यहाँ? डायरेक्टली सैलरी इक्वल टू 50,000 वेयर डिपार्टमेंट एचआर. So all HR people will get salary 50,000. So I have just changed little bit in the query. Now write a query to update the name of an employee from Raj to Raj. Means 1A instead of that 2A. ठीक है? So not necessary in our database we are having name Raj. So we will try to modify someone else. Like example number, role employee number 1, Amit Sharma is there, AMIT. So I'll make it as AMEET. Can I do like that? Update employee, set name equal to Amit Sharma, where name equal to Amit Sharma. मीन्स प्रीवियसली उसका नेम अमित शर्मा था, वो अभी बना दो एज अमित शर्मा. ठीक है, इट इज जस्ट अ वेरिएशन. वहां राज को राज बनाने के लिए कहा था, तो यहां मैंने ये चेंज कर दिया. ठीक है, सी एक ही रिकॉर्ड अफेक्ट हुआ बिकॉज देयर वाज ओनली वन रिकॉर्ड हुज नेम वाज अमित शर्मा. इट इज चेंज टू AMEET. राइट, न्यूमरोलॉजिस्ट. न्यूमरोलॉजिस्ट होता है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर होता है, वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी होता है. तो न्यूमरोलॉजिस्ट से इसने कंसल्ट किया, तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसका स्पेलिंग चेंज करने के लिए कहा. AMIT की जगह पे AMEET करो. सी फ्रॉम टुमारो आपका पूरा भाग्य बदल जाएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू बिलीव इट और नो. है ना, वो न्यूमरोलॉजिस्ट, वन फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी एक है, जो ऐसे नेम्स चेंज करके देती है सेलिब्रिटीज के. कैन यू सी? ये पहला वाला रिकॉर्ड चेंज हो गया, अमित शर्मा AMIT से AMEET. ठीक है, तो नाउ आई होप अबाउट अपडेट इज क्लियर. देन वी विल मूव टू द next command. Can you give me quick confirmation? Okay, later
I'll give you exercise also based on it. Got it, sir. Okay. Then we will move to the next DML command. DML command here next week. That is delete. This also come under data manipulation language command. Okay. Now this is to delete the records from the database. एंड ये परमानेंटली डिलीट होता है ठीक है मीन्स ये ऑटो अपडेट है अगर आपको चाहिए कि इट शुड नॉट अफेक्ट इन द डेटाबेस टिल यू डोंट गिव कमिट then you have to go into some transaction mode and then perform that operation but by default when you issue a delete command it's going to permanently remove the command from your table ठीक है so this is for deleting the records so delete syntax is like this delete from, and you can check all these commands are more of like English sentences. As you are speaking with some other entity, किसी दूसरे person से बात कर रहे हो वैसे, तो you are human and you are talking with DBMS, but you are talking with DBMS as if DBMS is a human and the DBMS knows English and you are speaking in English. बिकॉज उसका ओरिजिन वैसे ही था आईबीएम का प्रोजेक्ट ही वो था कि डेवलपिंग अ सिस्टम वे ह्यूमन विल टॉक विद दैट सिस्टम in the natural language and natural language like English. So delete from and then you have to give table name. Okay. And if you issue only this much command, delete from table name, it is going to delete all the records. सारे के सारे record delete हो गए. But अगर आपने इधर condition दिया, where condition, so it is going to delete only those records which are satisfying this condition. जो रिकॉर्ड ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ओनली वो रिकॉर्ड्स डिलीट होने वाले हैं ठीक है तो दिस पार्ट इज ऑप्शनल ओके तो व्हेन यू डोंट गिव दिस ऑल द रिकॉर्ड्स आर डिलीट बट टेबल विल एग्जिस्ट रिमेंबर टेबल एग्जिस्ट होगा बट टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स चले जाए अंडरस्टैंडिंग ना क्लियर तो जैसे लाइक बैग है तो बैग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं लाइक व्हेन मॉम कम्स फ्रॉम द मार्केट तो the entire bag, there is onions are there, potatoes are there, so many things are there. So she removes it and keeps it in different places. And at the end, the bag becomes empty. But she is not throwing the bag because she always carries a cloth bag because she believes in eco-friendliness. So she is not using any plastic bag, the cloth bag. So she'll just fold and keep that cloth bag somewhere, and again she'll start using it. Again, that cloth bag she will take and again start putting values in it. So bag exists. Only the items in that bag are removed. So afterwards, if you want, you can again start adding in it. Understanding? Clear? So remember the table will exist, only the records from the table will go. The delete command in SQL is used to remove records from a table. Syntax delete from table name. If you give only this delete from table name, all records will get deleted. And if you put condition, where condition, okay? So only the records which are satisfying this condition, पूरे टेबल में जितने रिकॉर्ड्स है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उतने ही रिकॉर्ड्स क्या होने वाले हैं डिलीट ओके एग्जाम्पल दे रहा हूं देखो राइट अ क्वेरी टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट इज एचआर so I am told to delete all the records of which department HR department example C if we are issuing that command delete from employee where department equal to HR whenever you are comparing any string it is case sensitive huh? Sorry insensitive HR small लिखो capital लिखो कुछ problem नहीं still it will delete it if you want it sensitive then you have to issue some flags I'll tell you मैं या फिर एक concept होता है called binary I'll tell you about that but
नॉर्मली इट इज केस इनसेंसिटिव. अब HR कैपिटल लिख के देखो, स्मॉल लिखो, H कैपिटल R स्मॉल, स्टिल इट विल वर्क. ठीक है. तो आई गेस देयर वर अराउंड 24 records in HR department. If I issue this command, 24 records will get deleted. Can you see? 24 records affected. And now if you check the records in the employee table, can you see, is it showing only 74 records? Meaning those 24 records are deleted from those 98 records. From 98 record. You can check. देखो यहाँ HR डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स चले गए. आर देयर एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम HR डिपार्टमेंट? नो. ठीक है. देन सेम. हाँ. हेलो. हाँ, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, guys, if you want to ask something, you can please ask. No, sir, clear. I thought somewhere the noise was coming. Okay. So this part is clear. Similarly, like write a query to delete the record of an employee having name as Raj Joshi. Okay. So now maybe in our table we don't have, but still, if I issue this command, delete from employee where name equal to Raj Joshi. So if we don't have a record with the name Raj Joshi, zero records will be deleted. See, zero records affected. ठीक है. बट एटलीस्ट द क्वेरी इज क्लियर टू यू. तो अगर एम्प्लॉय टेबल में एक रिकॉर्ड ऐसा होता था जिसका नेम राज जोशी है, तो दैट रिकॉर्ड विल गेट डिलीटेड. ठीक है. You're just simple queries. Simple one or two examples. At the end, when all the concepts are clear, like update, delete, then select clause, then where, in where, how to use operators, different relational operator, logical operators, all these things are over. Then, based on all this concept, one consolidated exercise I'll give you, where you need to apply all the things what you have learned in the past. Okay. Then moving to the next command, that is select. I hope this delete and update is clear. Coming to select. Select comes under category DQL, that is data query language. ठीक है. तो select किस category में आता है? Data query language. It is just for retrieving the records from your table. And when it will retrieve the record, it will send it to the workbench, and workbench will display it to the end user. MySQL server. I hope you know that. Here we have two parts. MySQL workbench होता है और एक MySQL server. So it will take this query. MySQL server will retrieve the records from the database, and those records it will deliver it to the workbench. Workbench collect that record and show it to the end user, which we see it here. है ना. जब हम select query issue करते हैं, तो देखो यहाँ जो output आता है, तो actually this query from the workbench is gone to, ये query पहले किसको चला गया? MySQL server. Server is running the query. And when server checks that this is a select query, it will take the table. Then from the backend, that is from your storage, it will retrieve the records. And that records, your server will give it to the workbench. Workbench will collect it and display it to the end user. ये end user को दिखाता है वो records. ठीक है. So select is for retrieving. Now select is having lot of variations. देखो, four combinations are there. Like I'll tell you, like suppose this is your table. So you want to display all records and all column. Every column, every record. Means all record, all column. Then you will write select star from table. ठीक है. कॉम्बिनेशंस वैसे समझो कि आपको सारे रिकॉर्ड सारे कॉलम चाहिए, तो select star from table.
तो स्टार लिखा है all column, no where clause, all row. Now you want all column but selected row. Those row which satisfy the condition. जो records वो condition को satisfy करता है, उतने ही records चाहिए मुझे. ठीक है? Only those selected record. But I want all the column. Many times query optimization में ये preferred होता है कि unnecessarily don't write star. बहुत बार कोशिश करो कि उतने ही कॉलम्स लिखो जो आपको प्रिंट करने हैं, माने डिस्प्ले करने हैं. Correct? Generally, you should avoid writing star and mention only those columns of your interest. Okay? But this combination is clear. First, all row, all column. Now, if I give like this, select star from table, and then I'm writing where condition. Remember the order in which you are writing, the same order it is not executed. तो लास्ट में जब अपना जॉइंस एंड सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट टाइम ऑर्डर बाय लिमिट ग्रुप बाय हैविंग एवरीथिंग इज ओवर दैट टाइम आई शो यू द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आल्सो नाउ दो यू हैव रिटन select first from next and where okay but remember select is not executed first पहले from होगा फिर where होगा और फिर select हो जाएगा पहले from होगा from means it will take the table from the backend and backend के टेबल में से पहले वैल्यूज मेमोरी में लाएगा ठीक है तो डेटाबेस से आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो पहले मेमोरी में लेके आएगा उसमें से फिल्टरिंग करेगा बाय वेयर एंड जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स है उसमें जो जो कॉलम्स आपको चाहिए अब जैसे इधर सारे तो इट विल टेक दैट कॉलम्स एंड सेंड इट टू द वर्कबेंच विल डिस्प्ले. So always remember first it will be from, then where, and then select. But ये सीक्वेंस इन तीन को लिए ही है बट अगर ऑर्डर बाय आ गया ग्रुप बाय आ गया लिमिट आया तब फिर सीक्वेंस लास्ट नहीं होता है सॉरी सेलेक्ट लास्ट नहीं होता है उसके पहले कोई और आएगा एंड फिर सिलेक्ट रहेगा करेक्ट तो when the things get added I'll tell you that order also ये केस में ये ऑर्डर रहेगा ठीक है तो फर्स्ट फ्रॉम then where and then select. Though you're typing it in this order, it is not going to get executed in the same order. Why? Because it is not a imperative language. It is a declarative language. Imperative algorithmic रहता है. तो आपने जैसे algorithm लिखा है, उसी sequence में काम चलेगा. Understanding? So what is this combination going to do? All column selected record. Selected record, all column. Now, which records will get selected, which will satisfy that condition? जो रिकॉर्ड ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उतने ही रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे ओके नाउ सपोज यू वांट ऑल रो बट सिलेक्टेड कॉलम तो इसमें ही स्टार के जगह पे कॉलम नेम लिखो ओके तो इंस्टेड ऑफ स्टार गिव द कॉलम नेम सो हियर व्हाट इट विल डू selected columns ठीक है एंड ऑल रो एंड यू वांट सेलेक्टेड कॉलम सेलेक्टेड रो तो इसी में वेरिएशन क्या करोगे यहां कॉलम नेम्स लिखोगे सो इट विल प्रिंट सेलेक्टेड रो सेलेक्टेड कॉलम selected row selected column ठीक है तो आई होप यू कैन do the imagination how it works okay now for filtering we have to build a where condition and then how to build conditions we need some operators I'll be telling you about that operators also. So select comes under which category? DQL, that is data query language. It is used for retrieving the records from the database. Okay, then it is used to retrieve data from a database, right? And if you want to retrieve only the specific column, to retrieve data present in specific column, use this. Select the selected column from table. So selected column but all row.
And to retrieve all the data present in a table, then use select star from table. But in this both example, what is coming? All row, all row, because where clause nahi likha hai. तो all row selected column और all row all column. इस केस में all row all column है और यहां क्या आएगा? All row all column. But here what it will give? All row, Selected columns. ठीक है, selected column. Getting? Or you can say specific column, whatever columns you want. ठीक है? हाँ, but if you want selected row, then you have to attach a where clause. So we will discuss about that where separately. आगे हम लोग पढ़ रहे हैं. So when to use where clause? When you want to filter the records. Means you want only the selected records should be highlighted or they only should be printed. Okay, so for filtering the record, in short, filtering. Like, for example, you have all the employee record and you just want only the employees who are staying in Pune city. So you have to filter them, filtering करना है, ठीक है? So you have lot of values and that values are given to a funnel and फिर वो funnel में से आपको limited records ही मिलेंगे. तो वो फनल से जब पास होकर इधर फिल्टर होकर आ रहा है तो यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है? कंडीशन. तो ईच एंड एवरी वन इज गिवन. दोज हु सेटिस्फाई कंडीशन विल कम डाउन, दोज हु डोंट दे आर बाउंस्ड, वो रिजेक्ट हो जाएंगे. तो ऊपर से एक एक रिकॉर्ड दिया जा रहा है ये फनल को एंड ये फनल में ये कंडीशन टेस्ट हो रहा है. दोज हु सेटिस्फाई द कंडीशन दे कम डाउन इन दिस ग्रुप एंड दोज हु डोंट सेटिस्फाई आर रिजेक्टेड. तो नीचे और कम रिकॉर्ड्स आएंगे. तो इसमें ओनली वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो ये कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई. ठीक है? तो व्हाट वेयर क्लॉज डज? इट फिल्टर्स द रोज. It is filtering is, I hope you got it. It is separating the rows which are satisfying the condition, right? So I have all the employee record, but I want only those employees who are having salary more than 70,000. Filtering कर रहे हो. Or I want to display only those employees who are from HR department. Filtering कर रहे हो. Get it, na? Or I want all the employees whose age is between 20 to 30. फिल्टरिंग कर रहे हो तो जिसका 20 से कम है 30 से ज्यादा है वो रिजेक्ट हो जाएंगे और जिनका एज 20 टू 30 है उतने ही फिल्टर हो जाएंगे. ओनली दैट रिकॉर्ड्स यू विल बी एबल टू सी. सो इन शॉर्ट, when you are applying the condition on each row and those rows which satisfy that condition are filtered and those which are filtered only that we are printing using where clause. देखो अब यहां भी स्टार लिख सकते हो. तो यू वांट सेलेक्टेड रो बट ऑल कॉलम, देन राइट स्टार. Okay. Example देखो, write a query to display all the employees having age greater than 20. अभी हमारे इसमें से एक्चुअली 24 रिकॉर्ड्स चले गए तो हम क्या करते हैं, फॉर टाइम बीइंग ये टेबल डिलीट करके वापस क्रिएट कर देते हैं and I'll just recreate it and again I'll add that records. ठीक है? Table created and again this 98 records I'll add in the table. Okay, and now we will filter. So here the condition given is write a query to display all employee records having age greater than 20. So select star from employee where age greater than 20. It is not hard and fast rule that you have to write everything on the separate line. You can type on the same line, separate line. It is only for your clarification. Remember, first is from performed. So what MySQL does, it searches this table in the database, आपके storage पे.
ये एम्प्लॉय नाम का टेबल दिखेगा, उसके सारे रिकॉर्ड्स पहले मेमोरी में लाएगा, फिर उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेगा, एंड वो फिल्टर रिकॉर्ड के सारे कॉलम्स फाइनली प्रिंट करेगा। ठीक है, सी। So around 58 records we have got who are having age more than 20. तो टोटल नहीं, सारे ही आ गए शायद 98। तो हमारे इसमें सबके सब एज किसके अबव ही है 20। तो इंस्टेड ऑफ 20 I'll change the range. Suppose I'm putting 40. Let's see. So you're getting only 13 records because these are the 13 records who are having age more than 40. ठीक है? Okay. So I hope that part is clear to you guys. Okay, so is update, delete, select, where clause, everything clear? Quick Yes, sir. confirmation. Clear. Everyone. Okay, others also like Ganesh, Aditi, others who joined. Clear, sir. Meantime, if some others have joined, please you people also give confirmation. Now moving to some more commands. Okay. And just don't assume that we are just going to learn commands in this whole course. No, but obviously first you have to learn commands. तो पहले commands तो सीखना ही पड़ेगा. And once you are done with all the commands, then you will start applying them for solving exercises. तो exercises पहले basic exercise हो गए, फिर कुछ scenario based देता हूँ. कुछ लिट कोड प्लेटफॉर्म के होते हैं. लिट कोड प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिग मैनफैंग कंपनीज. तो लिट कोड प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट आल्सो यू ट्राई टू सॉल्व. ठीक है, योर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बूस्टेड if you try to solve those questions. And many companies ask questions from that platform only. Okay? And there they have categorized questions in easy, medium, and hard. Only easy also if you cover, then also it is sufficient. No need to go to medium and hard also. वो easy वाले भी cover किए ना तो भी maximum interviews crack हो जाता है. Correct? Now we will move to the next command, that is alter. Alter comes under DDL category, yeah, guys. DDL, called as data definition language. Means this is to modify the design of your table. तो पहले टेबल आप क्रिएट करते हो ना, by using create table command. create table command से क्या किया, टेबल क्रिएट किया, तो आपका स्कीमा बन गया. स्कीमा मीन्स डिजाइन बन गया टेबल का. आफ्टर दैट यू स्टार्ट एडिंग रिकॉर्ड्स इन. So suppose at some stage you realize, no, the design is to be changed. You want to add some column in it. कुछ column missing है. या एक ऐसा कुछ column add किया है जो meaningless है, कुछ काम का नहीं है, unnecessarily add किया है. Or you have added the column but the size is less. जैसे email 50 किया, but then you realize 50 is less. I want to make it 100. You can do it. So you can drop column, you can add column, you can change the data types. Okay, you can rename column. Column का नाम maybe आपने पहले PHNO रखा था, तो now you want to make it phone. So you can change the name of that column and all these variations, changing the name, changing sizes and data type, dropping column, adding new column, all that we do it using alter. So remember, alter is a DDL command, data definition. Alter command doesn't modify, it is not for modifying values. वैल्यूज को मॉडिफाई करना है टेबल के अंदर के, तो अपडेट कमांड यूज करना है गाइस. ये डिजाइन ही चेंज करने के लिए कि आपने टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट एंड सिटी, बट बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, एक फोन कॉलम भी होना चाहिए था, ईमेल कॉलम होना चाहिए था. करेक्ट? देन एज कॉलम. देन समटाइम्स योर एज कुछ काम का नहीं है, रिमूव करो, तो रिमूव कर सकते हैं. आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, तो दैट यू डू इट यूजिंग ऑल्टर. तो ऑल्टर के काफी वेरिएशंस है, सब एक एक करके पढ़ेंगे, बट बेसिकली ऑल्टर इज फॉर व्हाट. तो ऑल्टर इज अ डीडीएल कमांड. ऑल्टर ये नॉर्मल इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं ना,
when you alter your dress or a uniform, स्कूल से यूनिफॉर्म मिल गया है बट उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड साइज का दिया है बट वो आपको परफेक्ट नहीं हो रहा है, फिटिंग नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हो, तो चेंजेस कर रहे हो ना, तो ऑल्टरिंग, आप वो डिजाइन को चेंज कर रहे हो, तो ऑल्टर इज अ डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, used to modify existing database objects like table. ठीक है, टेबल है, इंडेक्सेस है, कंस्ट्रेंट्स है, इसके वेरिएशंस है, काफी सारे वेरिएशंस है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला वेरिएशन देखता है एडिंग अ कॉलम, इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम, देन व्हाट टू डू, तो यू हैव टू जस्ट राइट alter table, command is like this, alter is a keyword, then what you want to alter, the table, alter table, table name, ठीक है, then you have to write add column, ओके, एंड फिर वो कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप, वो नया कॉलम जो भी ऐड करना है, एंड इट्स डेटा टाइप, दैट टाइम ओनली यू वांट टू ऐड कंस्ट्रेंट, दैट आल्सो यू कैन डू, कॉलम डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, वो उसी समय उसका कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंटैक्स देख कैसे, alter table, तो slide, on the slide whenever I give any syntax, purposely the keywords I have written in uppercase. It is not mandatory to write in uppercase, but on the slide I have used to identify that it is a keyword. मैं कैपिटल लिखा है तो इससे क्लियर होता है कि भाई ये कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है, करेक्ट। तो ऑल्टर टेबल, देन गिव योर टेबल नेम, then what you want to do, you want to add a column, so you have to write add, then the new column, its data type, and if you want to add constraints, you can add constraints, okay, ठीक है। देखो, here we will do. Now, if you want to see the design of your table, there is one command called describe. You can write complete describe or only DESC. Describe employee. It will just show you the design of your database, like database name, your table, that which column, its data type, whether it is primary or no, all that things. देखो ये पूरा डिजाइन देता है, तो कॉलम क्या है, आईडी इंटीजर, फिर वो नल है क्या, नो, इज इट प्राइमरी की, यस, ऑटो इंक्रीमेंट है क्या, यस, फिर वैसे ही नेम, वेयर कैर 100, तो इट इज जस्ट टेलिंग which columns are there in the table and what are their data types and what are the constraints, all that things. Now what I'll do is I'll add one column in it, इसमें एक फोन कॉलम ऐड करता हूं, तो alter table employee, add phone, and I'll create phone as char 10, and condition constraint भी डाल देता हूं as not null, suppose, ठीक है। Now if you check the description, can you see, has it added one more column called phone of character type size 10, and is null allowed, no, getting guys। तो इस तरह से मैंने इस टेबल में एक फोन कॉलम ऐड किया ऑफ डेटा टाइप कैरेक्टर 10, एंड कंस्टेंट भी उधर ऐड कर दिया, ठीक है। सेम वे यहां कंस्ट्रेंट्स आप लोग अलग अलग कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हो, लाइक पैटर्न मैचिंग, एग्जैक्ट 10 लेंथ का चाहिए तो उसके लिए रेगेक्स यूज कर, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, तो आई टेल यू, जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव एनी कॉलम, कॉलम रिमूव करना है, तो फॉर दैट देयर इज ड्रॉप कॉलम। एक्चुअली ड्रॉप ये कमांड जो होता है ना, वो और भी चीजों को ड्रॉप करने के लिए होता है, like it is used for dropping a table as well, तो drop table, table name, वो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए भी होता है, तो हम लिखते हैं drop database, database name, गेट, इसलिए यहां क्या ड्रॉप करना है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तो ड्रॉप कॉलम, कॉलम कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा, okay, but now the latest version of MySQL says if you don't write the word column, it will assume you're dropping a column,
ठीक है, तो कमांड ऐसे ऑल्टर टेबल देना है, फिर टेबल नेम, फिर नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ड्रॉप करना है। तो यू हैव टू राइट ड्रॉप कॉलम, कॉलम कीवर्ड, गेटिंग। बट स्टैंडर्ड माइस्क्यूएल कहता है कि ये कीवर्ड भी लिखना है, ड्रॉप कॉलम एंड फिर कॉलम नेम, वट एवर द कॉलम नेम। बट अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये नहीं लिखा तो भी वो ड्रॉप कर देता है। ऐसा क्यों था in the previous version of MySQL? Because they're saying drop keyword is used for dropping many things. It is used for dropping a table also. It is used for dropping a database. It is used for dropping view. It is used for dropping a function, drop trigger, drop procedure. So many things you can drop. So you have to tell no what to drop. क्या ड्रॉप करना है वो ड्रॉप के बाद लिखना पड़ता है। तो इसलिए यहां भी ड्रॉप के बाद क्या ड्रॉप करना है तो वो लिखना है। बट इफ यू आर यूजिंग ड्रॉप अलोंग विथ ऑल्टर, तो ये नहीं लिखा ना वर्ड कॉलम तो भी वर्क होता है, यू कैन चेक, आप देख सकते हो। बट स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऐसा है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो व्हाट आई डू, आई ड्रॉप दिस फोन नंबर कॉलम, ऐड तो कर दिया था बट मैं वो वापस रिमूव कर देता हूं। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप फोन, ओके, दैट्स ऑल। सी, तो वो वर्ड कॉलम नहीं लिखा तो भी वर्क होता है, बिकॉज इनका कहना है ये ड्रॉप अपने ऑल्टर के साथ यूज किया, तो ऑब्वियसली यू आर ड्रॉपिंग अ कॉलम। तो नहीं भी मेंशन किया कॉलम, देन ऑल्सो इट अज्यूम्स दैट यू आर ड्रॉपिंग अ कॉलम। तो फोन कॉलम चला गया, तो आपने यहां अगर डिस्क्रिप्शन देखा एम्प्लॉय का, तो कैन यू सी, इज देयर दैट फोन कॉलम और इज इट गॉन? चला गया। आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, द फोन कॉलम इज गॉन। ठीक है। देन इफ यू वांट टू चेंज द साइज एंड द डेटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम, देन देयर इज कीवर्ड मॉडिफाई। तो ऐसा लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई जो एग्जिस्टिंग कॉलम है जिसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है, whose data type you want to change, that column name you have to give, and then the new data type and its size, उसका नया डेटा टाइप और उसका साइज देना है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेटा टाइप सेम रखना है, सिर्फ साइज कम ज्यादा करना है, तो यू कैन। ठीक है। तो ये जो ऐड है वैसे ही है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, इंस्टेड ऑफ ऐड वर्ड मॉडिफाई, but here the column is not a new column, the existing column, and the data type is new data type, new size। ठीक है, देखो, alter table, table name, modify the old column and the new data type। फॉर एग्जाम्पल देखो कि हमारे यहां ये सिटी 50 है एंड डिपार्टमेंट 50 है, आई ट्राई टू चेंज इट टू 100। ओके गाइज, तो देखो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई, मॉडिफाई विच कॉलम, तो मॉडिफाई डिपार्टमेंट टू वेयर केयर 100, and I think two things at a time we cannot. Let's see. Okay, modify department and then city where care 100. Let's check if we do this way, it takes. Oh no, no. So at a time, I think it is only one exam, एक modify. Okay, now it has changed the department size from 50 to 100. You can check the description. Now in the description, can you see डिपार्टमेंट वेयर केयर 100? बट वो प्रीवियसली नॉट नल था, अभी वो नल हो गया क्योंकि मैंने
वो चेंज करते समय वो लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया। करेक्ट, ओके, चलो इधर मैं लिखता हूं नॉट नल। तो द साइज इज सेम, आई हैव जस्ट एडेड दैट नॉट नल कंस्ट्रेंट। So now it has become not null size 100. ठीक है? तो I hope you're understanding. And here also you may have a doubt that can we add in one alter table command more than one column? So we will take the help of our AI tool and we'll ask to AI that is it possible? ठीक है? So now what I'm asking to the AI tool that can we add more than one column using alter command in MySQL? Yes, you can, but then add a column again you have to write. ठीक है? तो it's good that you got to know. तो modify also you can do at a time, but then again you have to write that. And all the things also you can do at a time. मैं एक ही समय में कॉलम ऐड कर रहे हो, कॉलम मॉडिफाई कर रहे हो, कॉलम ड्रॉप कर रहे हो, सब कुछ एक साथ भी कर सकते हो. तो इट इज पॉसिबल. ओके गाइस, तो एटलीस्ट वी गॉट टू नो. नहीं तो फिर हम लोग ये इल्यूजन में रहते थे कि एक समय में एक ही मॉडिफाई होता है. तो चलो मैं इधर करके दिखाता हूँ कि एट अ टाइम वी विल मॉडिफाई द साइज ऑफ डिपार्टमेंट एंड वी विल मॉडिफाई द साइज ऑफ सिटी एज वेल. ठीक है? तो you can do, but again you have to write modify column, whatever, modify city. So it is allowed. See, and now you check the description. See, both city and department, both have become varchar 100, varchar. So this thing is applicable for drop. This is applicable for add also. If you want to add more column, again write comma, add next column, comma, add next column. And dropping also, if you want to do, again you have to write drop phone, comma, drop next, comma. And all three things also at a time you can do. Means you can add also, drop also, modify everything in one alter table. Possible. Understanding, guys? ठीक है? तो Yes, sir. Clear. मीन्स एटलीस्ट यू गॉट टू नो. नहीं तो एक ये सब होने के बाद किसी के दिमाग में वो क्वेश्चन आता था कि एक समय में एक ही कॉलम ऐड कर सकते हैं क्या, या एक समय में एक ही कॉलम ड्रॉप, या एक समय में एक ही कॉलम मॉडिफाई. तो एट अ टाइम यू कैन मॉडिफाई, बट दिस होल पार्ट अगेन यू राइट कॉमा अगेन. ड्रॉपिंग ऑल्सो, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, कॉमा, ड्रॉप कॉलम कॉलम, add also, and all three things in one query also you can do. एक ही क्वेरी में तीनों चीजें भी कर सकते हो. ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना. बिकॉज सच कैच आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज. जानबूझ के ऐसी चीजें इंटरव्यूज में पूछता है जो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड वे से कर चुके रहते हैं. स्टैंडर्ड वे मीन्स एक समय में एक ही कॉलम ऐड किया रहता है, एक समय में एक ही कॉलम ड्रॉप. एंड पर्पसली इंटरव्यू में ऐसा पूछेंगे कि ये तीनों चीजें में एक ही कमांड है. एंड देन बिग क्वेश्चन मार्क कम, सर ने ऐसा लिया नहीं था. गेट इट? तो इसलिए ऐसे एक्सप्लोरेशन भी करते रहे. मीन्स भले मैंने ये 50 कमांड 60 कमांड सीखा है, तो उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन काम भी करते रहना. यू हैव टू डू इट. एवरीथिंग आई कैन नॉट डू. स्पून फीडिंग मैं नहीं कर सकता हूँ. ठीक है? बता भी दिया तो उसके अराउंड कुछ और चीजें है क्या, इसको एक्सप्लोर. इसलिए कहा था फर्स्ट लेक्चर में, बी क्यूरियस. बी क्यूरियस मीन्स कंटिन्यूअस दिमाग में क्वेश्चंस आते रहने चाहिए, एंड उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन ढूंढने में आप बिजी रहने चाहिए. करेक्ट? देन if you want to change the name of an existing column, you can change the name of the existing column by alter, and there is a separate rename command also for changing the name of an column. मीन्स कॉलम का नेम, फिर वो रीनेम कमांड से आप लोग टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं.
तो वेरिएशंस है, मैं एक एक करके बताता हूं. फर्स्ट बाय यूजिंग चेंज कीवर्ड. सी, alter table name, change, then whatever is the old column, then the new column, and at that time only you can give the data type as well. तो वो कॉलम का नाम भी चेंज करेगा और उसी समय उसका डेटा टाइप भी चेंज कर देगा. ठीक है. तो आई होप यू गॉट इट. एंड देयर इज वन मोर कॉल्ड रीनेम कीवर्ड. ऑल्टर टेबल नेम. ओके. ऑल्टर टेबल नेम. रीनेम, एक रीनेम नाम का कीवर्ड है. तो रीनेम ओल्ड नेम, टू टू और एक कीवर्ड है न्यू नेम. उस समय डेटा टाइप नहीं दे सकते. दैट इज ओनली यूज फॉर चेंजिंग द नेम. देखो ये रीनेम कमांड भी होता है इस तरह से. ऑल्टर टेबल नेम, रीनेम कॉलम. अगेन आप कहोगे यहां कॉलम वर्ड लिखना जरूरी है क्या? तो एक्चुअली ऑल्टर के साथ है तो नहीं लिखना है. क्यों? क्योंकि एनीवे वो किसको ही रीनेम करने वाला है, कॉलम को. बट स्टैंडर्ड रूल इज टू मेंशन दैट, क्योंकि रीनेम इज यूज फॉर रीनेमिंग अ टेबल एज वेल. तो रीनेम से टेबल भी रीनेम कर सकते हैं. तब फिर आपको टेबल लिखना पड़ेगा. रीनेम टेबल ओल्ड नेम टू न्यू नेम. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग रीनेमिंग कर सकते हो. यहां देखो, what I'll do is I'll just try to rename that name to full name. So I'll write alter table employee, change, okay, change what? Name to full name suppose. ठीक है. एंड उसका डेटा टाइप सपोज मैं उतना ही रखता हूं. Right? And now if you check the description, can you see the description is full name. Name बन गया full name. अब ये full name को वापस name में लाता हूं by rename command. Alter table employee या मैं rename use करूंगा. Rename what now? Full name to name. ठीक है. Here you have to write what you want to rename. Renaming a column. So you are renaming a column full name to. क्यों लिखना ये? क्योंकि रीनेम कमांड और चीजों को रीनेम करने के लिए भी है. तो रीनेमिंग कॉलम है, वैसे रीनेमिंग टेबल है, तो आप टेबल को भी रीनेम कर सकते हो. ठीक है. अभी फुल नेम वापस रीनेम टू नेम हो गया, तो यू कैन चेक. ठीक है. क्विकली देखो, ये फुल नेम वापस नेम बन गया. ओके गाइस. तो फॉर टुडे टिल हियर ओनली. फिर और थोड़ी सी चीजें है, लाइक ट्रंकेट है, ड्रॉप है, वो सब देखना है. फिर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे. अलग अलग ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके. तो ऑल दैट इन द नेक्स्ट सेशन.